Morning students, today we are going to see our next chapter, that is the two merchants of Seri. Okay, so Seri is a name of place. Okay, and merchants means the persons who sell across the sea, who sell the things across the sea. Once upon a time in a place called Seri, okay, there lived a merchant. Merchant means what? A person who sells the thing across the sea, or the person who buys and sells the things. Okay. So there was it is a story about two merchants, and the story lies in Seri name place. Okay. So we are going to start the story. It is very interesting story, so do watch the video. Once upon a time, in a place called Seri, there lived a merchant. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. What was the merchant was selling? Merchant was what merchant was doing? He went from town to town, different towns, selling pots, pans, and other things made of brass and tin. These are the metals, okay, and non-metals also. Pots and pans and things made of brass and tin. Brass and tin are metals. He traveled every day with another merchant who also sold brass and tinware. So there were total two merchants, okay, who were traveling to different towns. But this other man was greedy. Okay, one of the merchants, one was greedy. Greedy means lalchi. When he sold something, he sold it at a very high price. Okay, one merchant who was greedy, he sold everything at a high price. But when he bought something, he tried to give as little as possible. जब वो खरीदता था तो वो कम से कम पैसे देने की कोशिश करता था, बट सेलिंग के टाइम पे हाई प्राइस रखता था. तो दैट इज नोन एज ग्रीडीनेस. When two merchants went into a town, they divided the streets between them. Okay, street means the town की गलियाँ. Okay, so when they went into a town, they divided the street between them. Means four streets are mine and four streets are yours. For example, in these four streets, I am going to sell the things, and rest of the streets are yours. Each one went up and down the streets had he had chosen, calling tinware for sale, tinware for sale, brassware for sale, brass for sale, brass for sale. People came out to see, their doorstep and bought or traded with them. Okay, people came out their doorstep and bought or traded with them. Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his round there. Okay, for example, one merchant is selling his things in one street, so another merchant is not allowed to go there and sell his things. अगर एक की बारी पूरी हो जाती है पूरी सेलिंग करके उसकी वहाँ पे, तो फिर उसके बाद ही दूसरा वाला उस स्ट्रीट में जा सकता है. ओके, इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाय द थिंग्स. समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ सम वैल्यू. Okay, so this is known as barter system. In the earlier period, people were using this system only. There was not use of money. मनी का यूज नहीं होता था जैसे आज के ज़माने में होता है. In that period, people were using the barter system. They were exchanging things. For example, if someone is selling brass things, so people who had farming business or farmers, so they can give the some of the crops or some of the, we can say, wheat or whole wheat to them, and they can buy the things in exchange of that grain. Okay, whole wheat or grains. In one house there lived a poor old woman and her granddaughter, as you can see in the picture. Of the family had once been rich. Okay, they were been rich at once. वो पहले rich हुआ करते थे एक बार.
The Now the only thing they had left, all their richness, was a dish made up of gold. ओके उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, जो एक डिश थी, जो सोने की डिश थी. ओके, as you can see in the hand of the girl. Okay, however, the granddaughter did not know it was a golden dish. Okay, वो granddaughter को नहीं पता था कि ये golden dish है. The dish stood on a shelf among the other pots and pans. वो सारे pots and pans के साथ वो shelf में पड़ी हुई थी. Granddaughter को नहीं पता था कि that was a golden dish and was not often used, and they were not using it also. Now the greedy merchants passed this house calling, buy my water jars, buy my pans, buy my tinwares. The granddaughter said, oh grandma, do buy something for me, my dear. Okay, now the granddaughter says that, grandma, please do buy something for me. And what in return says the grandma? The grandmother says, my dear, said the old woman, we are too poor to buy anything. We have not anything to trade even. हमारे पास मनी तो नहीं है, लेकिन हम कुछ एक्सचेंज में भी नहीं दे सकते. वी आर टू पुअर. ओके, पहले हम रिच थे, लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है. देन व्हाट हैपन्स? ग्रैंडमदर Grandmother, see, I have found this old dish among the other pots and pans on the shelf. अब वो जो छोटी लड़की थी, उन्होंने अपनी दादी से क्या कहा कि ग्रैंडमदर, मुझे ये डिश मिली है शेल्फ में. वी डोंट एवर यूज इट. हम तो इसे कभी यूज भी नहीं करते. कैन वी ट्रेड दिस? क्या हम इसे ट्रेड कर सकते हैं? इसे एक्सचेंज में देके कुछ खरीद सकते हैं उनसे? परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट and give us something nice for it. Okay, so they were thinking about of exchanging the dish. The old woman called the merchant and showed him the dish. So old women had also not having idea that the dish was made up of gold. So उन्होंने उस merchant को बुलाया and said कि ये डिश आप ले सकते हैं क्या, और इसके एक्सचेंज में मुझे कोई चीज़ दे दीजिए. Saying, will you take this, sir, and give the little girl here something for it? Means इसके एक्सचेंज में आप कुछ इस छोटी लड़की को दे सकते हैं क्या? The grandmother asked to the merchant. The greedy man took the dish and scratched its side with needle. He came to know immediately that it was a golden dish, but he wanted to get it for nothing from the old woman. अब देखिए, ये जो मर्चेंट उनके घर पे आया था, वो टू मर्चेंट्स में का ग्रीडी वाला मर्चेंट था, मीन्स लालची. सो वंस ही टुक द डिश इन हिज हैंड, तो उसने क्या किया, निडल से, सुई से उसकी एक साइड स्क्रैच करके देखी, और उससे पता चल गया कि ये गोल्डन डिश है, मेड अप ऑफ गोल्ड. सो उसने, बट उसको वो डिश उनसे फ्री में लेनी थी, उसको उस बदले में कुछ नहीं देना था, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था. सो देन व्हाट हैपेंड? सो ही सेड, व्हाट इज दिस वर्थ? इसका क्या मिलेगा? नॉट इवन अ कॉपर कॉइन, एक कॉइन भी नहीं मिलेगा. ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे. उसने वो जमीन पे डाल दी डिश एंड वेंट अवे. द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम and buy the dish for few copper coins, as if doing great favor to the old lady. So उसने क्या प्लान किया था कि अब मैं इसे फेंक के ज़मीन पे चला जाऊंगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और थोड़े टाइम बाद आके उनसे वही डिश, सेम डिश बाय कर लूँगा, थोड़े से कॉइन्स दे के, कॉपर कॉइन्स दे के. तो उनको ऐसा लगेगा कि वो बहुत बड़ा फेवर कर रहे, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे. After a while, the honest merchant finished, and उसने वो वैसा किया. He did that throwing dish on the floor and went away. After a while, the honest merchant finished the rounds of his streets and entered the street where the old lady lived. अब
ऑनेस्ट वाला मर्चेंट, जो दूसरा वाला मर्चेंट था, वो उसी स्ट्रीट में गया. देन व्हाट हैपेंड, ही पास्ड हर हाउस कॉलिंग, बाय माई वाटर जर्स, बाय माई टीन वेयर्स, बाय माई ब्रास. And the honest man says that honest merchant was also a trader, merchant. So he was also going to buy my water jars, buy my tinwares, buy my brass. The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. Now the little girl is again saying to her grandmother that we should try once again विद दिस मर्चेंट. मतलब इस मर्चेंट को पूछ के देखते कि क्यों, अगर कोई ये मर्चेंट हमें कुछ दे सके इस डिश के बदले. माई चाइल्ड सेड द ग्रैंड मदर. The merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade, said the grandmother. But grandmother, said the girl, this one looks pleasant. Ask him, perhaps he will give us something for it. लेकिन ये वाला जो मर्चेंट है ये थोड़ा प्लीजेंट लग रहा है, हमें कुछ तो दे देंगे इसके बदले ये. Call him then and show it to him, said old woman. तो उनकी ग्रैंडमदर ने कहा कि ओके, कॉल हिम, वी विल सी. एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड्स ही न्यू इट वॉज अ गोल्ड. अब इस मर्चेंट को भी पता चल गया कि उन्होंने अपने हाथ में ही जब डिश ली तब उन्हें पता चल गया कि हाँ ये तो गोल्ड की डिश है, गोल्ड डिश है ये. इमीडिएटली ही सेड दिस इज ए गोल्डन डिश. ओके, व्हाट ही सेज, इट दिस इज ए, he said that it is a golden dish and it is worth more than all my money and all my wares. I will bring enough money tomorrow and then buy it from you. अब ये ऑनेस्ट मर्चेंट था तो इसने क्या कहा कि ये तो गोल्ड की डिश है. इन्होंने सच बता दिया कि हाँ दिस इज ए गोल्डन डिश. ये मेरे पास जितने भी पैसे हैं और जितने भी मेरे वेयर्स है, वेयर्स मीन्स थिंग्स टू बाय, things to things to buy or we can say things to be sold from the merchant. वो जो जितने भी उनकी बेचने वाली चीज़ें थी, जो टीन वेयर था या ब्रास वेयर था, जितने भी चीज़ें थी और जितना भी मनी था उतनी मनी में वो डिश हम बाय नहीं कर सकते बिकॉज इट वॉज नथिंग बट गोल्डन डिश मेड अप ऑफ गोल्ड. सो आई कांट बाई इट. आई विल कम टुमारो विथ इनफ मनी एंड आई विल बाई इट फ्रॉम यू. उन्होंने कहा मैं कल आऊँगा इनफ मनी लेके और आपसे बाय कर लूँगा. बिकॉज ही वॉज द ऑनेस्ट मर्चेंट. द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज एंड एज यूजल what will be happening? The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and the goodness of the merchant. वो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि कितना ऑनेस्ट और गुडनेस वाला मर्चेंट है ये, कितना अच्छी तरह से मुझे सच बता दिया. टेक दिस डिश एंड गिव मी मनी टुमारो, शी सेड. व्हाट शी सेड कि ये डिश तुम अभी ले लो और मनी मुझे कल दे देना, पैसे मुझे कल देना. बिकॉज शी वॉज ट्रस्टिंग हिम, क्योंकि उसके ऑनेस्टी देख के वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि पहले वाला जो मर्चेंट था उन्होंने उनसे झूठ कहा और ये वाले मर्चेंट ने सच कहा, और इसलिए उसको इतना ट्रस्ट करने लगी थी कि उन्होंने वो गोल्डन डिश उसके हाथ में दी थी एंड सेड कि ये गोल्डन डिश आप ले लो और मुझे कल पैसे दे देना आप. द ऑनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वेयर्स एंड मनी विथ द ओल्ड वुमेन एंड टुक द डिश. ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या किया, जितने भी उसके पास पैसे और जितने भी बेचने वाली चीज़ें थी वो सारी ओल्ड वुमेन के पास रख दी और डिश ले ली. ही लेफ्ट हिमसेल्फ ओनली इनफ मनी फॉर द बोट राइड that he had to take on his way back. Okay, only boat ride money he has kept with him. After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, bring that dish to me and I will give you something for it. अब ग्रीडी मर्चेंट आया उनके पास और उसने जैसा प्लान किया था वैसा वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा था कि मुझे वो डिश दे दीजिए, मैं आपको थोड़े बहुत उसके बदले पैसे दे दूंगा या कोई चीज़ दे दूंगा. नो, सेड द ग्रैंड मदर. अब ग्रैंड मदर को पता चल गया था कि ये तो ग्रीडी मर्चेंट है, ये झूठ कह रहा है हमसे. तो शी सेड, नो, you said the dish was worthless, but another honest merchant has paid a great price for it. So I gave
it to him. मुझे ऑनेस्ट मर्चेंट ने अच्छी प्राइस दी है इसके बदले, तो मैंने उसे दे दिया वो वाली प्लेट. यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल, सेड द ग्रैंड मदर. कि पुअर और नीडी पीपल के एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दिस इज बैड थिंग. वॉट कुड द ग्रीडी मर्चेंट से. अब इसके बाद ग्रीडी मर्चेंट क्या कहता, गलती उसी की थी और भांडा उसका फूट चुका था. ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीडीनेस. ओके, उन्होंने उसकी डिसऑनेस्टी और ग्रीडीनेस की कीमत चुकाई. उसकी जो भी थी, उसका भांडा फूट चुका था और वो कुछ जवाब देने लायक नहीं बचा था. ओके, सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी शुड नॉट take advantage of poor and needy people. Okay, so this was the story to the story of two merchants of Seri. Okay, it was the story all about the two merchants of Seri. One was honest and another one was greedy. Okay, so I am going to send a pictures along with this video, and you have to complete your homework. Just to write question answers in the notebook and learn it. Okay, so do complete your homework.